Good morning, Anup sir. Good morning. Thank you so much for joining us, sir. A very good morning to one and all. We welcome you for the second day of the 3 days online training program on community-based climate change adaptation, jointly organized by the National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Government of India, and Avantika University. Dear friends, the National Institute of Disaster Management was constituted under an Act of the Parliament with the vision to play the role of a premier institute for capacity building and development in India. The efforts in this direction, which began with the formation of National Center for Disaster Management, NCDM, in 1995, gained impetus with its redesignation as the National Institute of Disaster Management for Training and Capacity Development. Under the Disaster Management Act 2005, NIDM has been assigned nodal responsibilities for human resource development, capacity building, training, research, documentation, and policy advocacy in the field of disaster management. The NIDM has a multidisciplinary core team of professionals working in various aspects of disaster management. In its endeavor to facilitate training and capacity development, the Institute has state-of-the-art facilities like classrooms, seminar hall, and video conferencing facilities. It also has a well-stocked library exclusively on the theme of disaster management and mitigation. The Institute provides training in face-to-face, online, and self-learning modes, as well as satellite-based training. This particular online training program is
being conducted by Avantika University in association with NIDM. Avantika University is a state private university established in 2017 in Ujjain in the state of Madhya Pradesh. It is India's first design-centered university offering undergraduate and postgraduate as well as doctoral programs in design, engineering, and management streams. So we once again welcome one and all to the second day of the 3 days online training program. And for the benefit of those who were not present yesterday, it would be my privilege to walk you through the recap of day 1 of the online training. The online training commenced with the special address by the Honorable Vice Chancellor of Avantika University, Dr. Nitin Rane. On behalf of Avantika University, we are thankful to Shri Taj Hassan Sir, IPS Executive Director NIDM, Professor Santosh Kumar, Head GIDRR Division NIDM, Dr. Preeti Soni, Senior Program Consultant NIDM, as well as Mr. Vivek Sharma, Mr. Ali Haider, Mr. Prabjot from the NIDM team, without whose support this event would not have been possible. Dear friends, the inaugural session on day 1 was delivered by Colonel Sanjay Srivastava, who is a veteran chairman of Climate Resilient Observing System Promotions Council, New Delhi. Colonel Sanjay spoke on hyperlocalization of climate change and climate action, understanding climate change at the local and community level and expected actions by the community. Colonel Sanjay also stressed on the interconnectivity between climate change, adaptability, vulnerability, and resilience. He took us through the climate change adaptation process and gave wonderful and useful tips for the same. The introductory session was followed by technical session 2 with Ms. Misha Tandon as the resource person. Ms. Misha Tandon is the subject expert in urban development, water resource management, climate change, and governance. Her talk focused on case studies of climate change adaptation, and she enlightened us on various case studies done nationally. She gave us an idea regarding the various training and awareness programs being conducted for the benefit of communities. So today, dear friends, we will be having 2 speakers who would be enlightening us on various aspects of climate change and community-based adaptation. So our first speaker would be joining us shortly, who is Mr. Mahesh Kamble. He is an assistant professor at Jamshedji Tata School of Disaster Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. And our second speaker for today, who is already here, is Mr. Anup Nautiyal. He is the founder of Social Development for Communities Foundation and is a prominent and well-recognized community leader. Anup sir, thank you once again for joining us. And until our the first speaker joins us, sir, if I could request you to kindly take us through, briefly about what the SDC Foundation does. Priya, good morning. And I don't know if, first of all, a very, very good morning to all of you. And to be very, very candid, Priya, I'm not really prepared for this because I thought my session is at 12 o'clock. And but since you've asked me, I see that there are 58 of us here in the group. And just to sort of get going, because otherwise it gets very, very monotonous and very, very one-sided. अगर आप लोग ये बता सकें कि आप लोग किस शहर में रहते हैं, तो अगर आप थोड़ा टाइप कर देंगे, it will make it a little bit interactive and थोड़ा आप एक दूसरे को हम बेहतर जान भी पाएंगे. अगर आप थोड़ा टाइप कर दें कहीं चैट बॉक्स में कि आप किस शहर में रहते हैं देश के. So so thank you, Dilip ji. So we have people from Ujjain, Delhi. थोड़ा अगर कुछ और, इंदौर. 50-60 लोग हैं. 60 लोगों में खाली 5 ही लोगों का जवाब आया है. आप भी जवाब दे दीजिए जरा. अगरतला, wow, very nice. Devashish, welcome from Agartala, Kolkata. All right, wonderful. So we have, north, south, east, west, everything covered. We have people from Ahmedabad as well. Quite a few, of course, from Ujjain, Delhi, elsewhere. Okay.
So my next question is that would you want me to speak मतलब क्या आप चाहेंगे मैं हिंदी में बात करूं प्रिया, या मैं अंग्रेजी में बात करूं? मैं पर्सनली तो मैं हिंदी ज़्यादा बेटर प्रेफर करता हूं, लेकिन आप लोग क्या चाहेंगे? Anything that is fine with you, so no issues. तो आपके जो अगले स्पीकर हैं वो कितने बजे ज्वाइन करेंगे? मतलब मैं एसडीसी के बारे में आपको खैर क्या बताऊं, मैं तो क्योंकि हमारा जो टॉपिक एक्चुअली आज का टॉपिक है वो तो क्लाइमेट चेंज को लेकर Yes, टॉपिक he'll be है। joining in another 5 minutes, sir. He'll ऑलराइट, just, yeah, he's हाँ, stuck मैं in थोड़ा सा traffic. मैं थोड़ा सा खाली उत्तराखंड का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो जस्ट टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस, आई एम बेस्ड आउट ऑफ देहरादून इन उत्तराखंड, और आप में से अधिकांश लोग जो हैं उत्तराखंड से भली भांति परिचित होंगे। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, एक हिमालयन राज्य है। और जब हम देश की बात करते हैं तो क्योंकि हमारे साथ में एनआईडीएम से भी, ऑफ कोर्स एनआईडीएम आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं, तो हम सबको मालूम है कि जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं कि जो वैसे तो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्लोबल इश्यू, इट्स अ नेशनल इश्यू, but states like Uttarakhand and in fact the entire Himalayan region is at the forefront of this massive climate change. You can call it climate change discourse or climate change activities, how climate change is impacting the lives of millions of people in the very, very prominent and very, very important Himalayan region of our country. आप सभी लोगों को मालूम है कि देश की जो बड़ी नदियां हैं, उदाहरण के तौर पर चाहे हम गंगा नदी की बात करते हैं, यमुना की बात करते हैं, तो ये सब हिमालय से ही निकलती हैं। और उत्तराखंड से ही इनफैक्ट इनका जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड है, गंगा नदी का भी और यमुना नदी का। तो चाहे नदियों के हिसाब से, जल जंगल के हिसाब से, इन तमाम पहलुओं से जब हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो पूरा जो चाहे वो हमारी बायोडाइवर्सिटी है या जो हमारा जो नेचर है वो यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, हमारे वो डिस्कोर्स को, हमारे पॉलिसी लैंडस्केप को, हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारे बजटरी एलोकेशंस को, हमारी जो जो पूरा रहन सहन है वो बड़ा प्रभावित करता है। क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा महत्व है जो कि हमारा आज का इश्यू है। आप सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पर कई बार आपदाएं भी आती रहती हैं, तो उन आपदाओं के कारण जो है पलायन भी होता है। इनफैक्ट माइग्रेशन is a very, very vital issue for a state like Uttarakhand. So lakhs of people have also migrated in the last several years. And then migration, of course, is another subject altogether as to why people migrate. But in short, if I have to say one thing which is very, very clear is that what we are also witnessing now is climate change induced migration. तो ये एक नया फिनोमिना, अब रिलेटिवली एक नया फिनोमिना है। तो लोगों ने माइग्रेट तो पिछले कई दशकों से किया है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो पहाड़ से जो पलायन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमको, क्योंकि वो हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ है, मैं इसीलिए उसका जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ, आपदाओं को लेकर के जो माइग्रेशन हुआ है। तो इस पर भी अब नेचुरली विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि गांव के गांव जो हैं या पूरे के पूरे इलाके, वहाँ पर जब कोई कैलामिटी होती है, जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड होती है, तो नेचुरली वहाँ पर लोग नहीं रह पाते हैं। और मैं आपको इसका एक, अब उसे शानदार तो नहीं कहना चाहिए, बट मैं आपको एक बड़ा रेलेवेंट, मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा, और शायद आप उस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके के साथ में रिलेट भी करेंगे। आप सब लोगों ने चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा, तो थोड़ा सा अगर आप यस लिख देंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा कि आपने चिपको के क्या आंदोलन से आप लोग परिचित हैं, आपने चिपको के बारे में सुना है। तो सभी यस कह रहे हैं, सभी जितने अभी रिस्पॉन्स आए। और अगर आपने चिपको आंदोलन के बारे में नहीं सुना है तो आप नो भी कर दीजिए, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ने हर चीज़ सुनी हो। लेकिन चिपको के बारे में, तो चिपको एक, उसको चिपको आंदोलन कहते हैं, एक बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट था जो कि महिलाओं के द्वारा उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला, तो वी हैव 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड, 9 of these are hill districts, so there is a district called Chamoli, which is where the holy Badrinath shrine, the Valley of Flowers, Hemkund Sahib, all these places are in
in the Chamoli district. In fact, the Chamoli district, the Honorable Prime Minister was also in Badrinath area, a few weeks ago, and he had also gone to the village of Mana. So typically that village of Mana is called the last village on the Indo-China border, but the Honorable Prime Minister instead said that this is not the last village, this is the first village. तो माना गांव भी जो है वो भी चमोली में है, और इसी पूरे चमोली क्षेत्र में एक गौरा देवी जो थी, और आप में से मतलब मैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप इस प्रोग्राम के बाद में अगर आप गूगल करके थोड़ा गौरा देवी की पूरी उस कहानी को पढ़ेंगे, उस संघर्ष को पढ़ेंगे, और उस गांव का नाम रेनी गांव है. So the village is called Reni. It is in the upper reaches of the Chamoli district. And that is where, 50 years ago, okay, in today's age and world, we all talk about climate change, environment, sustainability, this and that. But आप और हम खुद कल्पना कर सकते हैं कि 50 साल पहले क्या माहौल था, और उस समय कोई, क्योंकि उनके लिए तो हमारे लिए ये एनवायरनमेंट है, लेकिन उन लोगों के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी है. तो वहां पर किस तरीके के साथ में वहां पर पेड़ों के कटान को जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उस समय आए थे, ये 50 साल पहले की बात है. तो वहां पर वो आए और किस तरीके के साथ में पेड़ों को काटने के लिए आए. गांव से किस तरीके के साथ में प्रशासन ने पुरुषों को अपने पास में बुला लिया था, तो वहां पर उन्होंने उनको बुला लिया था, लेकिन किस तरीके से महिलाओं ने पेड़ों को चिपक करके अपने पेड़ों को कटने से रोका था. और ये एक फेमिनिज्म ड्रिवन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की जो एक पूरी दुनिया में अलग जो जगाई थी, वो गौरा देवी और उनकी जो साथी थी, महिलाएं थी, उन्होंने किस तरीके के साथ में पेड़ बचाए थे. तो इट्स बहुत बड़ा एक मूवमेंट है. इनफैक्ट उत्तराखंड में एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं शेखर पाठक जी, वो पद्मश्री हैं. उनको अभी अपनी चिपको की किताब के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है. तो मैंने रेनी गांव का और गौरा देवी जी का मैंने इसलिए जिक्र किया कि हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की. तो जो 50 साल पहले उन लोगों ने अपने जंगलों को बचाया था, क्लाइमेट चेंज के कारण पिछले कुछ वर्षों में जो आपदाएं उस क्षेत्र में आई हैं, वहां के लोगों को अब विवश होना पड़ रहा है कि उन्हें उस रेनी गांव को, उस ऐतिहासिक रेनी गांव को छोड़ना पड़ रहा है. तो आप ये खुद कल्पना कर सकते हैं. दिस इज वन एग्जांपल of how climate change, we were talking about, or rather I was talking about, mentioning about climate change induced migration. So this is one example that I thought might be relevant and topical to share in the course of this dialogue. तो प्रिया जी, आपने तो मुझे कहा था SDC के बारे में बात करो. Frankly, I find it very boring, to talk about my own cells. I think it's better to talk about our state, talk about the issues here. But is the gentleman who was supposed to... Yes, he is joined, sir, and we are extremely thankful to you for sharing your knowledge, and we look forward to your session now next. And dear friends, we have with us today Mr. Mahesh Kamble, who is our first speaker. And Mr. Mahesh Kamble is working as an assistant professor in Jamshedji Tata School of Disaster Studies in Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, since 2006. Welcome to you, Mahesh sir. Thank you so much for joining us today. And he completed his bachelor's degree in psychology from DG Ruparel College, University of Mumbai, and master's degree in social work with specialization in urban and rural community development from Tata Institute of Social Sciences in 1995. Currently, he is pursuing his PhD from Tata Institute of Social Sciences. Since being a student, he has been actively working in the voluntary sector with student organization and grassroots level voluntary organizations. Sorry, ma'am, it was a little old CV. It's too detailed. I don't think it requires to be read at all. But currently, I'm an assistant professor in School of Disaster Studies. Thank you so much for joining us today, sir. And if you could kindly, just take us briefly through what exactly you do at Tata Institute of Social Sciences, that would be great. Yes, we offer master's program in disaster management. It's a dual degree program of MA and MSc in disaster management, and there are 3 specialization courses in that. So I teach here. I teach mainly governance related courses. I teach community engagement and many courses around that. So, thank you, sir. So dear friends, Mr. Mahesh Kamble is going to speak on climate change adaptation and livelihoods. Over to you, Mahesh sir. Thank you so much once again.
And I'm very sorry, Anupji was telling such an interesting story. I did not want to disturb actually. Not only because it was interesting, but also because it was so relevant for the topic that I'm Yes. going to talk on. Yes. So, but let me try to finish as early as possible, and then I hope Anupji can comment on the presentation, and that will throw more light on what I'm going to talk about, and that Yes. will be Thank you so much, interesting. sir. So, let me start my presentation. I'm sharing screen. Just let me know if it is visible. Yes, sir. It is visible. Yeah, is it visible? I'll switch off my camera. That will make it little more easy to see. Is it visible? Can you see the slideshow? Yes, sir. Yeah. So I'm going to talk about community-based climate change adaptation and livelihoods. I'll briefly talk about the perspective of climate change that you will see from community's perspective, and then I'll talk about livelihood, a little about framework. But the focus of the presentation is on making it community-based, how the communities should be involved in taking decision, and what are some of the dimensions of that. I'll make the presentation, and I'll be more than happy to be stopped in between for clarifications, for throwing lights, for editing, for correcting me. I'll be more than happy if you can stop me in between and question. And towards the end, of course, I'll look forward for more questions towards the end. I've used quite a few photographs in this presentation, which are taken from social media. So they are there in the Google Docs, or there are some photographs which I have taken when I have worked in the field. So there are some photographs with that background. So let's focus more on community-based part of climate change adaptation. I'm not going in details of what climate change is. I'm sure that part is already covered. But when we are talking about climate change, these are some of the things we talk about. We talk about global warming, we talk about greenhouse gases, we talk about Paris Agreement, Rio Conference, we talk about anthropogenic factors in climate change, the footprints, the carbon footprints, carbon emission. We talk about various country positions, we talk about ecosystem services. This is what the debate of climate change is full of. These are some of the words which regularly come across when we talk about climate change. But what does it mean for communities? What does it mean for people? For people, climate change is maybe lack of rainfall, or inadequate rainfall, or untimely rainfall, or hailstorms, or cyclones, or basically for them it is loss of their livelihood. I'm speaking more from the rural perspective, so I'll focus more on agriculture, but it need not be only agriculture, because all all kinds of occupations are affected because of climate change. But for a common person, and half of India is into agriculture, so I think it's uh, more relevant to focus on agricultural sector, and it is the worst affected field because of climate change. So for a farmer, climate change does not mean Paris Agreement or Kyoto Protocol or Paris Agreement. For a farmer, climate change means change in frequency and intensity and predictability of rainfall. Your voice is not audible, sir. Hello. Yes, sir. You're audible now. Am I audible? Okay, I'll hold Yes. it a little more. So I was telling, for a common person, climate change basically relates with the loss of livelihood. He will lose the work that he has done for over a period, maybe a month, a year, or 3 months, or whatever. But agricultural loss is what he means by climate change. We have seen, like this year, there was a huge untimely rains, and the crop of onion just disappeared. All the fields were full of water, and the farmer will lose everything. That is the interpretation of climate change for them. So for them, climate change means change in frequency and intensity and predictability of rainfall and other so-called natural phenomena, whether they are
natural or they are anthropogenic, that can be debated, or maybe we talk more about anthropogenic factors behind cyclones or hailstorms or other climatic conditions. But for a common person, for the community, it only means change in frequency, intensity, and predictability of climate. Earlier, we knew that the rains will start somewhere in the month of in Maharashtra we called it when the Mriga Nakshatra starts, the rain starts. Before Mruga, there will be some pre-monsoon rains will be there. With Mruga Nakshatra, rains will start and it will go till Hasta Nakshatra. Now, traditionally, we knew the period when it is going to rain, but now the period has changed. We knew in that period it will rain. In some part, it will rain heavy. Some part, it will rain less. Like the Western Maharashtra part will have heavy rains. The Konkan will have heavy rains. Vidarbha will have less rains. But even that is changing now. Earlier, it was regional variations in rainfall. The other day, I was talking to a village, some villages in Marathwada, and they were telling, sir, पहले जब बारिश आती थी, सो दूसरे गांव में पूछना पड़ता था कि हमारे यहाँ बारिश आई है, आपके यहाँ आई है क्या? अभी एक ही गांव में दो पार्ट्स में पूछना पड़ता है कि हमारे यहाँ बारिश है, आपके यहाँ है क्या? एक वाड़ी में बारिश आती है, दूसरे वाड़ी में बारिश नहीं होती है. So the rainfall has changed where it has become very concentrated. There will be concentrated rainfall in some parts and there will be no rainfall on other parts. So the same region will have floods and drought at the same time. Now it is becoming more concentrated where people are saying even in one village you can have drought and flood at the same time, because if these are two different watersheds or two different aquifers are there, then we'll have enough water in one part and very inadequate rainfall in another part. That is also possible because the rains are getting concentrated. How do we know this? I don't think we have gone to so much of micro level analysis. No, we will not see such micro level analysis in scientific magazines, but this is what the people are saying. So the people perspective of climate change is something that we need to consider. The intensity of rainfall has changed. When it rains so heavy that one feels like it is a cloudburst. And when there is no rain, there is no rain at all. Currently in December, Maharashtra, generally Mumbai is cold. Now it is extremely hot even in this period, and it is so hot that it feels like summer. So we are going towards the intensity of the temperature, intensity of the rainfall has increased. That is how people can talk about this. So the predictability has changed, intensity has changed, frequency has changed, and all this has affected making any decisions about agriculture. Earlier, all the agricultural decisions of what to sow, when to sow, what crop will be cultivated for that year were dependent on this kind of predictability of the monsoons and availability of water. Now, because this predictability has changed, decision making is also affected. Farmers are taking decision on factors which are totally unpredictable and beyond their control. And therefore, the climate change basically means disaster for them. And this brings us to another kind of understanding of disaster, that how do you work on disaster? How do you work on climate change adaptation? Climate change adaptation for a common man or for a common person will basically mean disaster risk reduction. Climate change and disaster risk reduction are not two different things. If you look at literature on climate change, you'll continuously find reference of disaster risk reduction because they are so well connected with each other. You'll also see the third term that I am going to use, that is sustainable development. Sustainable development, disaster risk reduction, and climate change adaptation are extremely closely related with each other if they are not one. I would say they are actually, when we are talking about sustainable development, we are talking about climate change adaptation. When we are talking about disaster risk reduction, we are talking about climate change adaptation. So these three terms are extremely closely related with each other. Climate change, disaster risk reduction, and sustainable development. One has to look at these three terms together. So for a common person, climate change means the loss that they are suffered because of change in frequency, intensity, and predictability of climatic phenomena. And therefore, if climate change adaptation and disaster risk reduction are so closely related with each other, one also needs to consider the structural causes of vulnerability while talking about climate change. People are not affected only because of heavy rainfall. They are affected because they are vulnerable. So who stays in low-lying areas? Who holds the land in low-lying areas? Who holds less
land, who holds more land, what kind of work you will do, what kind of income you will have, what kind of standard of living you will have, what kind of well-being you will have, depends on the structure of the society. So the caste will play a very important role, gender will play a very important role, which plays a role in defining vulnerability. Vulnerability is susceptibility to any hazard. So climate change does not make similar impact on everyone, but the ones who are more vulnerable will be affected more seriously or more severely. I'm sure you must have talked about poverty as vulnerability and vulnerability as the important factor which is affected by climate change. So it is important to understand the structural causes of vulnerability when we are talking about climate change adaptation. So how the land distribution is seen in rural areas will be a structural cause of vulnerability. And there will be multiple such causes which are related with the way power is distributed in the society. One also needs to look at social, political, and economical dimensions of vulnerability. You will see caste system, you will see changing political realities, changing economic realities with globalization, the kind of changes that is coming in economic structure of the and how the poor people are affected with that. All this affects their vulnerabilities. And therefore, social, political, and economic dimensions also need to be considered when you are talking about climate change adaptation and disaster risk reduction. All Sorry this to interrupt, Mahesh sir, the slides are not moving. not moving. No, 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 sir. We Uh, are on the title slide itself. oh, okay. Can you see the slide now? Yes, sir. The climate change. Yes. I crossed 4 or 5 slides. Okay. So these are the words which we talk about when we talk about climate change. I was talking about this. Then I showed these photographs which basically talk about the common person's perspective about climate change. For them, climate change basically means lack of rainfall or excessively heavy rainfall that affects their livelihood. I also showed this how livelihood is affected because of climate change, and that climate change means frequency, intensity, and predictability of rainfall has changed. And for a common person, climate change basically means livelihood damage. And therefore, I came to this slide that climate change adaptation is disaster risk reduction, where structural causes of vulnerability and social, political, and economic dimensions of vulnerability need to be considered. So, can you see the slide of climate change adaptation is disaster risk reduction now? Yes, sir. Yes. Okay. So, when we talk about climate change adaptation, we also need to understand the coping capacity and lived experience of vulnerable people. Like the common people are telling that it rains in one part of the village or not in the other part of village, then the concentration of rainfall is something that we need to understand from them, which comes from the lived experience of vulnerable people. And one has to understand. So there is also coping capacity. See, this kind of climatic damage and livelihood damage is not new for vulnerable people. They have been facing this kind of damage for generations. Excessive rainfall, crops getting affected due to pests, crops getting affected due to floods, inadequate rainfall. These have been realities right since generations, and our farmers have been facing this from generations. So they know how to cope with them. The intensity of this phenomena has increased. The frequency of this phenomena has increased. So the climate change has exacerbated the existing risks. That is how one has to look at the climate change. And therefore, one has to recognize that people have coping capacities. People have been coping with these kinds of climate change realities for a long time. People know how to cope with that. People have been adapted to this kind of changes, but the changes are becoming more and more frequent and intense. Therefore, there is a need to enhance people's capacity further, and people know how to deal with this. This is the basic presumption when we talk about climate change adaptation. There are some traditional beliefs and practices which were already there. Like I was in Marathwada the other day, where there are lots of deaths due to what do we call, जो बिजली गिरने से काफी मौतें पिछले कुछ दिनों से हो रही है. And I was asking people, but this cannot be a new phenomenon. Then how your generations have managed? For past few generations, there was a
tradition that before the rainfall starts, they will, जो जमीन खोदने के लिए जो एक लोहे का औजार होता है, it is called pahar. They will dig that pahar into the angan of their house. That will be kept straight position in their house, and that will work as the arrestor. Yeah? So whenever there is a lightning, this pahar will work as an arrestor, and the lightning will go there, and the house and the other property will be saved from the lightning. That was the traditional wisdom that they had. Now what has happened is the situation has changed. Now the villages are becoming more crowded, so the homestead remains there, but all the livestock is tied in the fields where this kind of practices are not there, and those are open areas, so more prone to lightning, and therefore more and more damage due to lightning is seen during this period, because the traditional beliefs are compromised with, the traditional practices are compromised with. If you look at the clothes that traditional people wear, the kind of food that traditionally eaten in any region, all this is related with climatic conditions in which they are staying. So climate change adaptation is not new. The kind of clothes, the kind of food, the kind of agricultural practices are related with the climatic conditions where people are staying. So they have been adapting to the climate for generations, but the climate is changing so frequently that the adaptation also so one has to recognize that they have their coping capacities, they have adaptability, but it is not in the perspective of climate change. So connecting that with climate change is something that needs to be done. People can understand this clearly, and they should understand this clearly. So there is a capacity that people have which needs to be recognized. And this is, I think, the philosophical foundation of when we are talking about participatory approach. So what do we do when we talk about community-based climate change adaptation? It means to develop local perspective by becoming more responsive to local people and local situation. Let's ask people how they face climate change, how they perceive climate change, what kind of risks are getting more and more intensified, how those risks can be handled, what needs to be done. And people will be able to tell solution because they have been coping with this kind of situation for generations. So the whole idea is to recognize people's capacities to come up with alternatives to deal with the climate change. That is how the community-based approach of climate change will work. And that's exactly the example that Anupji was talking about, how people resisted cutting of trees. Women, especially the most vulnerable group, resisted cutting of trees. And that is how people can actually take initiative in changing the climate change realities. Having talked this much about climate change, I'm not going in details of climate change debate because I'm sure that must have already been covered. Let's look at the livelihood. What is livelihood? Livelihood comprises the capabilities, assets, that is material and social resources. You will have group of people, you will have self-help group, you will have caste groups, you will have khap groups, which help in building your livelihood. Similarly, material, you will have physical capital, that is part of the material. So capabilities and assets which are required for means of living. So all the activities which build means of living is livelihood. In typically in rural areas, we will see there will be a farmer who also has some hens, some goats, some livestock. He does farming. He also sells milk. He also may be doing some kind of fishing. He also does some small allied businesses. He also goes as a laborer. All this forms their livelihood. So whatever activities, capabilities, assets they have to acquire a means of living means livelihood. And what is sustainable livelihood? Sustainable livelihood is when people use their resources to cope with and recover from all the stresses and shocks that they will face, without undermining the natural resource base. That is what sustainable livelihood means. So with their existing resources, they can cope with the environmental shocks. And cope means there will be minimum damage, and there will be faster and easy recovery where they can come back to the normal whatever before shock life as easily and as earlier as possible. That would mean a sustainable lifestyle.
So this is what sustainable livelihood would mean. Again, I'm not going in details of livelihood because I want to focus more on participation part of this. You must have seen this DFID framework of sustainable livelihoods. If you have not seen, please Google it and one can very easily find it. It is a very important framework to understand the impact on livelihood. It talks about vulnerability context in which people are staying. It talks about can you see the slide of framework? Yes, sir. Yeah. So the first block in this you will see is the vulnerability context. In what kind of vulnerability people are staying. Then you see the livelihood assets. It talks about people having financial capital, physical capital, social capital, human capital, and natural capital. These five capitals make their livelihood. And these capitals are influenced with the kind of processes and structures are there in the governance system. What kind of policies are there? What kind of institutional processes are there? What kind of laws are there? What kind of schemes the government implements? All this will have impact over vulnerability and the livelihood assets of the people. So all these livelihood assets are affected because of the shock, and the shock actually makes an impact over all these five kinds of capitals, and that is where people have to implement certain livelihood strategies which help them to recover from the shock. And when it comes to recovery from shock, what does it mean? It means having more income, stronger voice, reduced vulnerability, improved food security, and more sustainable use of natural resource base. That is how they recover from the shock. So what is important in this to understand is that livelihood strategies, the middle part, which will help people to recover from impact of climate change. This is what means by climate change adaptation. Adapting to climate change means designing livelihood strategies in such a manner that people can have more income, they can have stronger voice, they can participate in decision making, the vulnerability is reduced, they will better food security, and their natural resource base has increased. Towards this, people's human, natural, financial, physical, and social capital needs to be strengthened. This is what the framework talks about. It's a very interesting framework. One can spend a lot of time discussing this framework, but if you get the time, I'm not going in details of this, but I request everyone to go to Google and just understand this framework clearly. It will help us design the livelihood strategies. And one can see that there are multiple livelihood strategies people have been designing for generations to address the climatic conditions. Whereas this kind of watershed management program, the micro level watershed management program, where people redesign the land in such a manner that water can be conserved. Water will not just flow, but it will flow with less gravity, with less force, and therefore more and more water can percolate. It will help to refurbish the aquifer which is below the ground. It will help the cropping cycle, and the land quality will increase multiple times. So this kind of work one has seen, which will help people to reduce the shock of climate change by improving fertility of the land. And people have been doing this in a very participatory manner in various places. We have seen Pani Foundation's work recently that Amir Khan did in Maharashtra. We had Nam Foundation. In all over the country, there are multiple micro watershed management programs one has seen, where in a participatory manner, people have increased the fertility of their soil and have worked on land development issues. This is one kind of initiative towards absorbing the shock of climate change and a livelihood strategy. I see people faced kind of that they did in Odisha, because we have cyclone generally in the month of October. They changed the variety of rice, and they started cultivating rice which will be ready around 15 days before. So because the rice is ready to cultivate 15 days before the cyclone comes, the rice is already cut in safe condition. If the rice cutting is delayed and cyclone comes, then the rice will be wasted. Then your whatever work you have done for so long will be wasted. But if you can cut the rice before the cyclone comes, if it is cropped before the cyclone comes, then the rice can be saved. So this kind of change variety of rice
will help to protect the livelihood from environmental shock. There are multiple such efforts done in change in crop, the change in the variety of the seed, change in the intercropping thing. One has started more into horticulture than the crops which are more likely to be damaged due to climatic conditions. Horticulture is more maybe more stronger to face the shock of climatic conditions. But started things like greenhouse or polyhouse, which will protect from the impact of climatic conditions, and you can create artificial conditions inside where the crop will see good growth. These kind of initiatives are livelihood strategies which people have adopted for generations. This can be enhanced to face the shock of the climatic conditions, climate change. People have taken additional work, this kind of allied business where the plates of these papers, we call it patrapoli, but I don't know, this must be named in every language, where the papers are connected with each other to make a plate, which is used in wedding and in other places. This kind of allied businesses are increased. One sees allied business like making nurseries. So here you can see women sitting together and making nursery plants, will give them additional income which will be less affected by climate change. So people are trying to redesign their livelihood strategies to face the climate change conditions. People have also redesigned some new institutions and processes. Like we see grain bank, where people when they cultivate, they can store the grains in a bank kind of system. So when there is need, they can take it back. So banking of grains, that is a new institution that one can see in many places. It was already there, but it has enhanced with climate change. It will help people to overcome the shock of climate change and lack of adequate food production. You will also see new institutions like women's self-help groups, which will help them to face the shock of climate change and market fluctuations. So women can come in together and form groups like this is Mahila Kisan, where the uh, women farmers have come together to form a self-help group, and that will help them to build their social capital and face climate change conditions. Anup ji अभी जो बात कर रहे थे, where migration is also seen as one of the adaptation where people try to build up livelihood strategies by going into urban areas. Here I am focusing on rural areas, so I did not speak much urban vulnerabilities. But migration and going to urban areas is considered as a coping mechanism because you will get some kind of livelihood in urban areas. However, staying in urban areas changes the vulnerabilities where you are staying in abject poverty conditions with inadequate housing, inadequate toilets, inadequate water supply, inadequate drainage, inadequate sewage system, and then you are further vulnerable when you are in urban areas. So, though coping migration to urban areas is seen as a coping strategy, there are challenges related with this migration also. But urbanization is something that we are facing. It's already 42% of India is already urban, and one needs to also look at the urban vulnerabilities and how urban people cope. So these are some of the areas where people try to adapt to climate change realities. Am I audible and are the slides changing? Yes, sir. Okay. A question up to this, I mean, I've done major part. Then I'm going into the theories of participation. But if there is any question, please stop and ask. Let's look at the having talked about livelihood strategies and climate change. Now I'm coming to the discussion on participation. What are some of the values and attitude in participation? Why do we need participation? Why should we engage people in decision making? There are some basic principles of participation or some values in participation. Any profession is defined because of the ethical principles that it talks about. These are ethics of participation, and as I always say, because of these ethics, the profession is decided. So one has to understand the values participation is required. Worth and dignity of individual and faith in democratic processes recognized. Therefore, people have a right to participate. In democracy, participation of people from all walks of life is essential in reaching to appropriate decision. We believe in democracy by deliberation.
So participation of people, where people will come together, discuss, to put in their views, and will come to a consensus, is a very necessary process to actualize democracy. We believe in the ability of individuals and groups and communities to change. We know people can change. There can be a change, and there is an ability to change. Because of this belief, we work with people, and we believe in people's participation in decision making. Moreover, people have right to self-determination, how their life will be treated, what decisions will be taken about their life. People will decide that. And with this right to self-determination, one talks about participation. The process of interaction as an instrument to effect change. We believe that change need not only come by punishing people or giving them incentives, but by interacting with people, by convincing them, by telling them the reality, by telling them the other side, change can be brought in. So the process of interaction as an instrument of change is a very important value when we talk about participatory development. Also, there is a desirability of improving relation between individuals, groups, organizations, neighborhoods, and communities. When we do participatory approach, people engage with each other, they interview with each other, they interact with each other, because of which the relationship will be increased, strengthen the not only the social capital but also human capital, and that is what is going to help in long-term climate change resilience building. Therefore, improving relations is very important. And to do this, an orderly process is essential and compatible with desirable change in value system and social institution. So the change does not happen automatically. But because the climate change is not something that people control, it is happening from somewhere else, there has to be an orderly process to bring in change. That is where the role of worker becomes very important. And therefore, we engage with what is participatory approach. When we talk about participatory climate change adaptation, we are saying the process and the content both are participatory. What are we going to do and how are we going to do that is a participatory decision making. People might decide to change the cropping system, people might decide to start a new institution, people might decide to change the crop altogether, or people might decide to follow their own culture. It is their decision. The decision is taken through a participatory manner, and therefore participatory process and participatory content become a principle of participatory approach. Participatory approach is responsive. It will take care of what people believe in. So I talked about in the first slide, I speak about how people perceive climate change. That becomes important part. So it is responsive for people's perspectives. It is also proactive. It does not wait for the disaster to happen. It will start looking at possibilities of future changes and work towards that. So it is proactive. It is integrated. It talks about agriculture, housing, clothing, food security, what kind of food you work, what kind of work you do, what kind of education you are going to do. Everything is covered, and it is integrated and it is comprehensive. It is multi-sector and multi-discipline. You will need knowledge from various fields. You will need knowledge of geography, soil science, climatic studies, maybe use of geographical information system, sociology, political science, economics, most importantly, environment and climate. These are all sectors and disciplines from where the knowledge is put to use. Participation is an empowering process. People feel empowered when they participate in decision making, and it is a developmental process. It does not remain limited to the issue at hand, but many issues can be addressed because it is a developmental process. These are levels of participation where we are talking about nominal participation, where people are only beneficiaries of a project, instrumental participation, where we look for people's participation because their skills and knowledge can be helpful in implementation of project, representative participation, where people are involved in decision making, and transformative participation, where people take decisions and implement their own decisions. And that is what Anupji was talking about, a transformative participation in the in the people's movement. Again, this is another ladder of participation, where manipulation or giving therapy is non-participation actually, where people are only getting benefits of a program. Tokenism, where people are given information, there is consultation or there is a placation, जहाँ पे लोगों को पता चलता है कि हाँ आपकी वजह से हो रहा है. But these are like tokenism in participation. The real participation comes when we partner with people, when people, the power is delegated in people's hand, where people make their own decision, and the highest level of this ladder is citizen control,
where people decide what to do and how to do it. So these are the ladders of participation whether to see when we take decisions about climate change. There are various tools to engage people, which are called participatory. Earlier, it used to be called participatory rural appraisal. Now it is called participatory rapid appraisal (PRA). And there are multiple tools under PRA. There are some tools which I have listed here, but this is not limited. You have at least 200 various kinds of tools, 200 kinds of tools which can be used for participatory engagement of people. One can just search them and find them very easily. What are the benefits of participatory approach? It will help to identify multiple structural and non-structural measures of climate change adaptation. Structural measures in sense of maybe construction of a small dam. Non-structural measures maybe in formation of self-help group. Both kind of measures can be discussed here because it is coming from people's perspective. The real needs and priorities of people are addressed when we talk about participatory approach. If people, what kind of need people have and what are the priorities for addressing those will come up because it is a participatory manner. It allows rapid and effective coping and adaptation. Ownership of commitment and individuals in collective action will be there because people themselves have taken decision. It is very cost effective because the resources are mobilized by communities themselves. The replicability is much higher because it happens in one area, then other people will also pick it up. It strengthens local cohesion and cooperation, so it is empowering in that sense. Integration of climate change adaptation into local developmental planning process is possible because people are doing development planning and people are also considering climate change adaptation. It builds confidence that leads to empowerment, as we talked earlier. At the same time, there are also some concerns in participatory approach, which is the first is illiteracy and poverty. Many times the words which we use, the maps which you are using, the numbers that you are talking about, the climatic conditions that you are talking about, people may not understand merely because of illiteracy. It takes time to participate in decision making process. With poverty, people may not be able to give enough time to participate in such processes. Time concerns will be there. There will be community dynamics. Different community groups do not want to engage with each other. We have caste system which is very strong. We have gender system which is very strong, where women cannot participate in some decision making where men are sitting. So these are some of the challenges in community dynamics and community mobilization. There will be conflicting interest within community and everybody is not affected because of climate change. There will be some who are benefited of climate change and they will have vested interest. There is a short-term urgency to earn versus long-term priority to adapt to climate change. And then people have to decide a priority on this. How to make this changing priorities sustainable? That is another challenge that one has to see. Where will money come from? If there is a need to build a small check dam, then there has to be money. And where will this money come from? We don't know. So funding for structural measures becomes another big challenge in participatory procedures. The political environment, whether it is consensus building is possible or where there will be lobbying and advocacy in this entire process, that will come as a challenge. How will you separate, differentiate a measure of participation? The impact of participation, counting that is like very complicated. That may not be a possible thing. There are multiple such concerns in participatory approach. I have listed a few, but one can go on talking about this. I will skip this part and thank you. This is a photograph where my student had done participatory planning with women in Gujarat. You will see all these women are not really literate women, but they know their village, they know their situation, and that was facilitated by my student to make this map of the village, which will help them to design a development plan which will adapt, which will play a role in adapting to climate change. So these kind of initiatives are necessary where one can actually help people to come up with various alternatives of climate change adaptation. This is community-based climate change adaptation for livelihood. I'll stop here. If we have time for questions, I'll be more than happy. Thank you very much. Thank you, Mahesh sir, for the wonderful session. Dear friends, the forum is open for discussion now. If anyone has any questions, you please go ahead and ask Mahesh sir the questions, please. Mahesh sir, I have a question. Can you throw some light on some ancient or traditional methods for climate change adaptation from the livelihood perspective? Yes. Like change in crops is one of the biggest thing that one has seen over a period of time. Like I was telling, in Odisha, they changed the crop
The rice crop remains the same, but by changing the variety, you will get the crop earlier at home. That will save. Grain bank is also not new. Grain bank also has been a very traditional practice that we have, where you can preserve the grains for future use. You cannot preserve them at home because you will not have that system. But if many people come together and they exchange those grains and preserve them together, then that will work as a bank. And when there is food scarcity, this bank will help the people. I was telling this another method which I recently came to know about is, you know, जमीन खोदने के लिए there is a rod that is used, that iron rod. So there was a practice to keep that iron rod in front of your house before the monsoon starts. So this iron rod will work as the arrestor. This will absorb the lightning, the impact of lightning, and then your house will not be affected. Now what has happened is, sorry, with the changed realities, most of the livestock is shifted outside the village, and they are on the open. Sorry, they are on the open ground, which is make the livestock vulnerable, and people will have to go to the field. Uh, am I stuck? Am I audible? No, yes, audible, sir. Yes. So when people have to go to the field, then they are vulnerable to impact of lightning. That is how the realities are changing. But the traditional mechanism of putting the rod in front of your house was very important. Sorry for the technical issue. I think due to some network issue is logged out. Kindly bear with us until he joins again. Yes, Mahesh. Sorry, Sir. I think I got disconnected. Yes, yes. So there are multiple such methods that you will see everywhere. You go to the fishing community, they will tell you how it rains. When you have certain kind of fishes, then it will rain more. When this kind of fishes come to the this particular part in the ocean, then it is less likely to rain. When the fishes are on this side, then it is more like, those kind of indicators are there. Unfortunately, what has happened is, this kind of traditional beliefs are not necessarily questioned by scientific method. So we don't know whether one can consider that as knowledge, but that is definitely a belief which has proved right for a long time. And therefore, one has to focus more on documenting, understanding traditional belief systems, traditional knowledge systems, and how they can be used in case of climate change adaptation. Yes, sir, as rightly said, if we do not document it, maybe down the generations, we're going to lose that knowledge. Yes. Yes. So, one more question, sir. When you speak about the participatory approach and the proactiveness that is seen, what is your viewpoint, whether it is more in the urban areas or whether it is more in the rural areas? see, in urban area, the defining feature of urban area is individuals lose their individuality. When people don't know each other. Whereas so the dynamics of participation are very different in urban areas. Like if you go, I'm more talking from the perspective of the marginalized groups. So you go to the slums, then in slum people not necessarily know each other, or people coming together and working together will be very complicated, difficult in urban areas. Whereas in rural areas, everybody knows each other. So coming together, working together has always been part of rural work. Like in many rural areas, they have one day a month or one day a week where they'll do some village level work, like repairing of the bridge, repairing of the road, some kind of work that is done in a voluntary basis. So participatory development of villages had always been part of our culture, and they have been doing that. In urban areas, it's not that it is missing, but it is limited, and in that sense, the dynamics will be very different. In urban areas, the concentration of population will be so high that bringing them together for participatory decision is not easy. That happens through some cooperative societies. So the model of participation will be different. It will be more of representative participation in urban areas. Whereas in rural areas, direct participation is possible, but caste, gender related issues will be very strong in rural areas. You call a meeting in the common place, and temple is the most likely to be the common place. You call a meeting and women on periods will not come, the certain caste groups will not come, and then that will have impact over participation. The rural societies are by and large traditional societies where the traditional knowledge is more, but at the same time there is restriction of participation of
most marginalized and vulnerable groups. So both kinds of dimensions one is to consider. Thank you so much, sir. Friends, any questions, please? Okay, thank you once again, Mahesh sir. That was a wonderful session. Dear friends, we'll be moving on to our next session for today. We have with us Mr. Anup Nautiyal, who is the founder of Social Development for Communities, or SDC Foundation, which is a prominent and well-recognized community leader and social communicator in Uttarakhand. He has vast experience of working in the development, government, and corporate sectors. SDC Foundation is a Dehradun-based not-for-profit engaged in communication, capacity building, and community mobilization. Founded in 2017, SDC has been working closely on issues of citizen engagement, sustainable development, and stakeholder mobilization in Uttarakhand. Its key functional domains include environmental conservation, climate communication, solid and plastic waste management, sustainable urbanization, and public health. Anup sir is the brand ambassador for Dehradun for the Government of India nationwide sanitation and cleanliness competition, Swachh Sarvekshan. He is a member of several government committees that deal with development and climate change issues in Uttarakhand. He is also a prolific communicator who speaks and writes on a range of issues concerning social development and citizen participation. So welcome to you, Anup sir, and thank you so much for joining us today. Dear friends, Anup sir will be speaking on the role of community-based organization and women in climate change adaptation and mitigation, a case study from Uttarakhand. Over to you, Anup sir. Thank you once again. थैंक यू वेरी मच प्रिया और महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो अभी अपना प्रस्तुतिकरण दिया। तो बहुत सारी जो बातें थी जो आप और हम कर रहे थे वो सेम ही है, वो खैर खाली फ़र्क ये है कि अब मैं उत्तराखंड के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए वो नेचुरली क्रॉस कटिंग है, और चाहे वो महाराष्ट्र के उदाहरण हो, ऑफ कोर्स वहाँ का लैंडस्केप और हमारा लैंडस्केप बिल्कुल अलग है, लेकिन आई कुड रिलेट एंड रेजोनेट rather relate to everything that you were saying. So thank you so much, and I hope that through this initiative of NIDM Avantika University, we will also get to collaborate in the coming times. Thank you, sir. So thank you, Mahesh ji. So going ahead, दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि आप में से जस्ट अपनी क्यूरियोसिटी के लिए कि आप में से कितने लोग देहरादून तो नहीं उत्तराखंड आए होंगे, तो थोड़ा सा यस कर देंगे या उत्तराखंड लिख देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एक आइडिया लग जाएगा मुझे कि भाई आप में से क्या कुछ लोग आए हुए हैं। तो और दूसरी बात ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं म्यूट करके वो वीडियो ऑफ करके आप अपने किसी दूसरे काम में लगे हुए हैं, ये भी मालूम पड़ जाता है हमारे को। तो अभी तक खाली 3 लोगों ने बोला है कि वो जो है उत्तराखंड आए हैं 90 लोगों में से। तो और अच्छा चलो वरुण नहीं आए हुए हैं, तो चलो दैट्स वरुण आपका स्वागत है, कभी आइएगा वरुण तिवारी। दिनेश पटेल भी नहीं आए हुए यहाँ पे, और कौन, अच्छा कुछ यस कुछ नो आ रहे हैं। सो कुणाल ओके यस यस नो ओके, सो देयर आर सेवरल नोज। सो अच्छा तो काफी नो है इसमें तो प्रिया, तो थ्रू योर प्रोग्राम let me also extend an invite to all of you to come, and of course Uttarakhand is a wonderful state, बहुत ही अच्छी state है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा हमारे यहाँ आकर के। and maybe I don't know if you can feel the beauty of the sun. Priya, can you get a feeling how well lit my room is? Yes sir. All right, okay, good. तो जो मेरा सब्जेक्ट है, ओके थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बताया कि आप यहाँ आए हैं नहीं आए, मुझे इससे ये भी मालूम पड़ा कि आप लोग जो है हमारे साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं इसमें प्रोग्राम में। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा कुछ जेनरिक इश्यू शेयर करूंगा। अब ये तो इतना वास्ट टॉपिक है, अब इस पर क्या बात करी जाए, कितनी बात करी जाए, बट एक ये है कि भाई थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा उत्तराखंड को लेके। तो इट्स मोर फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट कि हम एक दूसरे के साथ में बात करेंगे। तो पहली बात तो मैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं कम्युनिटीज की, हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, तो मैं सबसे पहली बात तो ग्लेशियर्स के साथ में शुरू करना चाहता हूँ। और जो विशेष तौर पर जो हिमालयन स्टेट्स होती हैं, हिल स्टेट्स होती हैं, उनके लिए ग्लेशियर्स का एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो मतलब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, आपने भले ग्लेशियर ना भी देखे हों,
कि वो वही हमारी फ्रंट लाइन है और वही हमारे एक तरीके से हिमालयस को उसकी वो आइडेंटिटी उसको प्रेजेंट करते हैं। तो जो सबसे प्रोमिनेंट ग्लेशियर उत्तराखंड का है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, और जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है। तो आप लोग शायद कभी सुनते होंगे या आपने सुना होगा, एक उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तराखंड राज्य में, और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही ये गंगोत्री ग्लेशियर बना हुआ है। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहीं से गंगा नदी शुरू होती है, इसको कहते हैं गंगा का उद्गम स्थल है। तो एक अनुमान ये लगाया जाता है कि उत्तराखंड में लगभग 1000 ग्लेशियर हैं। अब गंगोत्री ग्लेशियर का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले लगभग 100 सालों में गंगोत्री ग्लेशियर क्या है वो, अब आप ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर आप ये इमेजिन कर लीजिए कि एक बहुत बड़ा आइस का एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन है, हम लेट्स से इट इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। अभी जो गंगोत्री ग्लेशियर है पिछले लगभग 80-90 साल में ये 1700 मीटर 1700 मीटर्स ये रिट्रीट कर चुका है पीछे। अब जब ये रिट्रीट कर रहा है तो ये तो पिछले 90 साल में हुआ, लेकिन जो उसका जो जो जब वो रिट्रीट कर रहा है पीछे, तो नेचुरली इन द लास्ट 2 और 3 डेकेड्स उसका जो रिट्रीव जो उसका जो रेट है वो फास्टर है। जैसे महेश जी ने भी बारिश के बारे में हमें बताया था कि भाई बारिश तो उतनी होती है जितनी पहले होती थी, लेकिन बारिश अब इरेटिक हो गई है। बारिश का तो ऐसा नहीं कि अब बरसात कम होती है, पहले की तुलना में ज्यादा होती है, बरसात उतनी होती है, लेकिन पहले अगर बरसात 200 दिन होती थी तो वो बरसात, आई एम अगेन सेइंग इट्स ओवर सिंप्लीफाइंग इट, वो अब लेट्स से 100 दिन होती है या 150 दिन होती है। तो ऐसे करके हमारा, अब आप कल्पना करिए कि आपका ग्लेशियर पीछे हो रहा है। जब आपका ग्लेशियर पीछे हो रहा है तो आपके बहुत सारे मोरेन्स या लूज डेब्रीज वहां रह रहे हैं। एंड इमेजिन करिए कि अगर वो लूज डेब्रीज ऊपर से नीचे आते हैं तो आप सबने केदारनाथ 2013 की जो डिजास्टर था, आप सबको उसके बारे में पता है। तो ये भी क्या था, वहां पर भी जो ग्लेशियर है चोराबाड़ी ग्लेशियर, वो भी, तो ऐसे ये जो पूरा, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं, मैं पहली बात आपसे ये ग्लेशियर रिट्रीट्स को लेकर करना चाहता था, जो कि हिमालयन रीजन में क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिल एरियाज हैं, मैं फिर से उत्तराखंड की बात ही करूंगा, यहाँ पे ऊपर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग किस्म के। उदाहरण के तौर पर आई एम श्योर आप सबको 4 धाम के बारे में पता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक 4 धाम ऑल वेदर हाईवे बन रहा है 900 किलोमीटर का, और यहाँ पर एक रेल लाइन भी बन रही है। तो अब देखिए सभी चीजों के प्लस माइनस होते हैं। तो अब इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, अब नेचुरली उसका एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई उससे, चाहे हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, हम इकोनॉमिक उसकी बात करते हैं, तो उन चीज़ों को मजबूती मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जो है वो जो हमारी फ्रेजिलिटी है माउंटेन्स की और वहाँ की कम्युनिटीज़ की, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी होती है। मैं आपको एग्जांपल ही देता हूँ, एक रेल लाइन बन रही है, तो ऋषिकेश का आपने नाम सुना होगा, तो ऋषिकेश से ऊपर 125 किलोमीटर की रेल लाइन बन रही है यहाँ तक कर्णप्रयाग, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कर्णप्रयाग, वहाँ तक। अब जब रेल लाइन बन रही है तो जो, अब वो तो टनलिंग, अब वो कहते हैं हम वो अब टनल वगैरह बनने हैं, तो वहां पे जो गांव बने हुए हैं, क्योंकि भाई टनल तो नीचे बनेगा, अब वहां पर घरों में क्रैक्स आ रहे हैं, तो अब वहां की कम्युनिटी इसको क्या होगा। तो अब ये क्लाइमेट चेंज, ये तो भाई ह्यूमन इंड्यूस्ड है ना ये वाला, तो ऐसी चीजें भी हो रही हैं। तीसरा एक और फिनोमिना जो हमको देखने में आ रहा है, मैं तो क्योंकि मैं खाली हिल्स के बारे में बात कर रहा हूं, जब पहाड़ों के गांवों पर असर पड़ रहा है, तो देखिए जो हम तो जब शहरों की बात करते हैं, उज्जैन बड़ा शहर है, अहमदाबाद बड़ा शहर है, दिल्ली बड़ा शहर है, देहरादून भी एक बड़ा शहर है रिलेटिवली। तो अब ये क्या हो रहा है कि लेकिन जो हमारे हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे भी छोटे छोटे शहर होते हैं, जहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं, 15,000 लोग रहते हैं, 8,000 लोग रहते हैं। तो जो गांव है, गांव के लोग छोड़ करके उन शहरों में बस रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक रिलेटिवली, पिछले दो दशकों में, पिछले 2 डेकेड्स में हमने देखा है कि देयर इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। सो वी हैव स्पोकन अबाउट 3 थिंग्स, मैं खैर बाद में रिकैप करूंगा। फिर एक बड़ा यूनिक फिनोमिना उत्तराखंड का है जिसे गोस्ट विलेजेस कहा जाता है, और हिंदी में हम भूतहा गांव कहते हैं, इंग्लिश में गोस्ट विलेजेस कहते हैं। हमारे राज्य में लगभग 16-17 हजार गाँव हैं, और इन 16-17 हजार गाँव में 16-1700 अप्रोक्सीमेटली 10% यू कैन से
ऐसे गांव हैं जहां पर एक भी इंसान नहीं रहता है, तो इसीलिए उसको गोस्ट विलेज कहा जाता है। एंड देर आर मेनी अदर विलेजेस जहां पर जो लोग रहते हैं 10 से कम लोग रहते हैं, 25 से कम लोग रहते हैं, 50 से कम लोग रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं। तो ये भी एक, अब आप उसको चाहे क्लाइमेट चेंज के कारण बोल लीजिए, चाहे उसको माइग्रेशन के कह लीजिए, हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे। बट द बिग पिक्चर रिमेन्स देयर आर मेनी गोस्ट विलेजेस। पांचवा एक और लोकल फिनोमिना क्या है दोस्तों, कि जो जानवर, और मैं जानवरों की बात कर रहा हूं, बंदर और सुअर, बंदरों ने और सुअरों ने वहां पर जो है खेती को बिल्कुल चौपट कर दिया है। तो ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा इश्यू है। और हम जो बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, मैं चाहे दिल्ली, अहमदाबाद, देहरादून, कोई से भी आप ऐसे शहर ले लीजिए, हम खुद एक्चुअली, क्योंकि हम अर्बन हैं, हम लोग अर्बन सिटीजन हैं, हम लोग नेचुरली हम उसको रिलेट नहीं कर सकते कि वहां पर वो बंदर और सुअर का कितना बड़ा आतंक होगा, कि वहां पर जो है उन्होंने कितना लोगों को परेशान कर रखा है। एंड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स दिस ह्यूमन एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स have increased very, very rapidly and very frequently in Uttarakhand. So this is another local sort of dimension that I wanted to share with you. जब मैं शुरू में बात कर रहा था, मैंने आपसे माइग्रेशन के बारे में भी बात करी थी, पलायन को लेकर के। ये भी उत्तराखंड का एक बड़ा सदाबहार मुद्दा है। और जो पलायन हो रहा है, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए करते हैं। एक और दोस्तों जो लोकल कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू शेयर, सो द होल आइडिया इज जस्ट टू share and create a little bit of awareness, a little bit of sensitivity, a little bit of ताकि आप उत्तराखंड को थोड़ा बहुत बेहतर जान पाएं, उसे थोड़ा बहुत बेहतर समझ पाएं नेचुरल डिजास्टर्स को लेके। तो देयर आर ऑलमोस्ट 500 विलेजेस, आई एम राउंडिंग देम ऑफ, which are vulnerable according to the Uttarakhand State Disaster Management Authority। अब आप कल्पना करिए, ऐसे 500 गांव हैं, बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा जो दोस्तों अगली बात आती है, और ये खाली उत्तराखंड की बात ही नहीं है, दिस इज वेरी मच अ नेशनल इशू, दैट मोस्ट institutions are working in silos. So be it the government, so government is what? Government is our political leadership, they are our bureaucrats, they are our officials, low level officials, they are our local bodies, whether it is panchayat or whether it is urban local bodies, and whether the people. So we are all working in silos. Until the time we will continue to work in silos, we will never be able to sort of really scale up solutions to the extent that are needed in the face of this climate change onslaught, not only in Uttarakhand, across the entire country, and of course across the entire world. But I'm not here to talk about the entire world. I'm just speaking on behalf of my own state. But this is pretty much a national issue, and in fact even the government of India is talking about that we have to stop working in silos. We have to be one and talk, not only talk, but we have to work in one. But ये एक आज की तारीख में कम से कम एक लोकल रियलिटी है कि लोग जो है साइलोज में काम करते हैं। जो कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट्स हो रहे हैं वो ऐसा नहीं है कुछ एफर्ट्स नहीं है, कुछ एफर्ट्स हैं, लेकिन उन एफर्ट्स को मैं बहुत समय से फील करता हूं कि उन एफर्ट्स को स्केल अप करने की जरूरत है। नहीं तो क्या होता है, ये एक अच्छा शब्द है, आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस, ये अपने आप में एक आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस बन के रह जाते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं कि ये सिविल सोसाइटी के भी होते हैं, एनजीओस के भी होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के भी होते हैं, लेकिन ये एम्पलीफाई नहीं हो पाते, ये स्केल अप नहीं कर पाते हैं। उसके भी आप कारण समझ सकते हैं भाई, कई बार तो पैसा ही नहीं होता है। अब हो सकता है मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, हो सकता है मैं 50 लोगों के साथ में काम करता हूँ, हो सकता है मेरे में अंदर क्षमता हो कि मैं 5000 लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। When I say I don't mean my own self, but any institution, for instance. But either they don't have the skill set, or they don't have resources, or they don't have the reach, or hand holding, or whatever reason. So I think this is what also is another thing. So I have shared with you 9 things so far. I'll very quickly recap them. हमने शुरू में ग्लेशियर्स की बात करी थी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी थी, हमने प्रोज एंड कॉन्स उसको लेके बात करी थी, हमने अर्बनाइजेशन इन हिल्स को लेके बात करी थी, गोस्ट विलेजेस को लेके बात करी थी,
बंदर सुअरों को लेके बात करी थी, माइग्रेशन को लेके बात करी थी, नेचुरल डिजास्टर्स उसके कारण जो रिहैबिलिटेशन हो रहा है उसको लेके बात करी थी, वर्किंग इन साइलोस को लेके बात करी थी, और कम्युनिटी एफर्ट्स के स्केलिंग को लेके बात करी थी। तो ये थोड़ा बहुत उत्तराखंड का लैंडस्केप है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले सकता हूँ, आप में से अगर अभी किसी का कोई सवाल हो तो आप मेरे से हल्का फुल्का सवाल पूछ सकते हैं, मैं फिर अगले सेकंड थोड़ा पार्ट पे आऊंगा आगे। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, इफ यू कुड थ्रो लाइट, आपने जैसे वेरी राइटली कहा कि एवरीवन इज वर्किंग इन साइलोस एंड वी नीड टू कम टुगेदर इन ऑर्डर टू मिटिगेट डिजास्टर। एंड आपके हिसाब से सर, बिकॉज मेजॉरिटी लोग जो यहाँ पे हैं अभी इस सेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आर फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो आप अगर हमको बता सकते हो कि इंस्टेड ऑफ नॉट ओनली द कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस दैट वी डू, बट अदर देन दैट हाउ कैन वी हेल्प इन मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर? देखिए इसमें आप लोग देखिए वहां से अब जो आपका आप कह रहे हैं भाई हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, हम कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ा जो रोल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्ले कर सकते हैं इसमें स्पेसिफिकली वो अवेयरनेस को लेकर के है। तो एक अवेयरनेस देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग तो चलिए सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, हम सब तो जानते हैं भाई क्लाइमेट चेंज क्या है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज को उसको मतलब सिंप्लीफाई करना और उसको एक लोकलाइज कॉन्टेक्स्ट देना मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि हम उसको मतलब एक लोकलाइज कॉन्टेक्स्ट कैसे देते हैं। मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा, अगर मैं अपनी बात करूं कि सपोज कल मैं कहीं जा रहा हूं, मैं उसको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल या मैं बहुत ज्यादा जार्गन या, क्योंकि भाई वो हम जिस कम्युनिटी एक क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और बड़े अच्छा उन्होंने कहा था महेश जी ने कि भाई वो क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह नहीं जानते, उनको नहीं पता है। वहां जाकर के हम COP27 और इजिप्ट और ये सारी बात करेंगे कि भाई यूएन काउंसिल में ये हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल ये है, पेरिस एग्रीमेंट, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस एट ऑल। सो जो आपका सवाल था कि हम उसे कैसे कर सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स किसी तरीके के साथ में ये क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन इन एन इजी टू अंडरस्टैंड मैनर इन द लोकल कॉन्टेक्स्ट अगर इसको करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अब आप अब मेरे को पता नहीं भाई आपके यहाँ से भाई नेचुरली अवंतिका यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, अब इसमें अवंतिका यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे आपके साथ में लोग जुड़े होंगे। अब भाई ठीक है, अब आप भी पूरे इंडिया में नहीं जा सकते, बट मे बी अगर आप कोई एक पर्टिकुलर रीजन आइडेंटिफाई करना चाहें, सपोज वेदर इट इज उत्तराखंड तो आपके लिए चलिए थोड़ा दूर हो जाएगा, बट एनी रीजन दैट यू आइडेंटिफाई, I would like to encourage you that, if you can think of some region, whether it's a district, whether it's a state, and there is, so much which is happening. I think, not only working in silos, but also there is a lot of information lying around here and there scattered, which, needs to be consolidated in one place. For instance, even success stories. आज अगर हम सक्सेस स्टोरीज का ही प्रिया एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि भाई हमारे रीजन की सक्सेस स्टोरीज क्या हैं। उदाहरण के तौर पर I have 1 or 2 success stories which I wanted to share today. So not that everything is grim and what you call कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, but there are also some community based studies. Of course, as I said, they need amplification, but I think somebody like an Avantika University, if you can just भाई जैसे उबर है या ओला है, तो ये भी तो क्या कर रहे हैं, ये भी तो कंसोलिडेट ही तो कर रहे हैं। तो ऐसे करके क्लाइमेट चेंज की जो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स हैं, इसका अगर कहीं कोई कंसोलिडेशन हो सके, उसके बेसिस पे अगर कोई कम्युनिकेशन मॉडल्स बन सके, उसके बेसिस पे ये लोकलाइज हो सके, मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आप लोगों का ये कंट्रीब्यूशन होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का। आप कुछ कहना चाहेंगी प्रिया बिफोर आई गो अहेड? No, yes, I think Shreya has something to say. श्रेया कह रही है कि if the government starts supporting these local or community efforts, solution can be scaled up. Also, people in the nearby city areas are not that aware. People are climate are. हाँ, तो ये देखो श्रेया ने बिल्कुल सही बात बोली है। बेसिकली श्रेया का ये कहना है कि भाई जो इससे अफेक्ट हो रहा है वही इससे अफेक्ट हो रहा है ना, बाकी तो कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा, बाकी को क्या फर्क पड़ता है भाई, इट इज बिजनेस एज यूजुअल, लाइफ एज यूजुअल।
तो ये इनफैक्ट मैं श्रेया की एक बात को और ऐड करना चाहूंगा। श्रेया, यू विल बी मतलब आपको सुनकर के थोड़ा शॉक्ड ही होंगे। अब भाई ये वाला गांव है, आप मेरा ये हाथ देखिए, ये वाला ये रेनी गांव है। मैंने शुरू में रेनी गांव का जिक्र किया था, ये क्या कहते हैं अपने, जो मैंने चमोली के जो गौरा देवी के गांव का जिक्र किया था। और वहां पर गांव के लोगों को प्रॉब्लम आई, तो वो वहां से जब नेक्स्ट विलेज में जाना चाहते तो अगले विलेज वाले तक जो है उनकी मदद करने को तैयार नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ा ग्रेव इश्यू है कि भाई ऑल्सो कम्युनिटीज ऑल्सो नीड टू हेल्प ईच अदर। अब ये तो देखिए थ्योरेटिकल बात हो जाएगी, हम तो यहाँ पे बैठ के जूम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। तो वो है, तो ये ऑफ कोर्स ये एक रियलिटी है। तो जो श्रेया ने बोला है कि भाई अब इसमें फैसिलिटेटर का रोल कौन प्ले करेगा, देखिए इसको तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही रोल प्ले करना पड़ेगा। और अगर हम अपने देश में भी एक एग्जांपल देखें डॉक्टर प्रिया, तो एक बहुत अच्छा जो मॉडल है वो उड़ीसा का मॉडल है। जिस तरीके के साथ में उड़ीसा ने, और महेश जी भी उसको बहुत अच्छे तरीके के साथ में जानते हैं कि भाई उड़ीसा तो एक बहुत बड़ा, बीइंग अ कोस्टल स्टेट, उड़ीसा इज अ वेरी वेरी डिजास्टर प्रोन स्टेट। तो अब वो डिजास्टर भी क्यों हो रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड हैं वो। तो अब ये वाले जो डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो किस तरीके के साथ में उड़ीसा ने एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच लेते हुए कम्युनिटीज के साथ में, और सरकार ने किस तरीके के साथ में मिलकर के अपने यहाँ पे अपने पूरे उस जो उनका पूरा जो इंफ्रा है उसको उन्होंने कैसे डेवलप किया है। I think this is a fantastic success story. And, this is something that, being a small community-based organization here in Uttarakhand, we are constantly and consistently raking up this issue that a vulnerable state, a climate vulnerable state like Uttarakhand also needs to have some sort, of course, we can't follow the Odisha model. We are not a coastal state. We are a hill state. But I'm sure that there are certain, there are many good practices which states like Uttarakhand can also emulate from states like Odisha. So this is, anyway, this is more at a state level advocacy that, we are engaging it. But to come back to this community-based climate change adaptation, I want to share one good example, एक positive example भी मैं share करना चाहता हूँ। तो उत्तराखंड में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड शीतला खेत। तो हमारे इनफैक्ट अब तो पूरे इंडिया में ही जंगलों में आग लगती है। मुझे लगता है शायद मध्य प्रदेश के भी जंगलों में आग लगती होगी। अब ये खाली ऐसा नहीं है कि ये खाली हिली एरियाज में ही रह गया। तो ये जो फॉरेस्ट फायर्स है, तो ये फॉरेस्ट फायर्स उत्तराखंड में हर साल फरवरी टू जून लगती है। ये एक फॉरेस्ट फायर सीजन होता है 15 फरवरी से लेके 15 जून तक। अब यू विल बी, इफ आई जस्ट शेयर वन डेटा पॉइंट विद ऑल ऑफ यू, आप भी सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। इन द लास्ट 20 years, almost 50,000 hectares of forests have जंगलों में आग लग चुकी है। अब ये 50,000 हेक्टेयर होता कितना है? So 100 hectare is equal to 1 square kilometer. So 1 square kilometer, as you know, is 1 kilometer like this and 1 kilometer like this. That is 1 square kilometer. So 500 square kilometers, तो 50,000 hectares is 500 square kilometers. 500 square kilometer बहुत बड़ा एरिया होता है। इतनी ज्यादा जंगलों में आग लग चुकी है। अब ये जो जंगलों में जो आग लगती है ये एक्चुअली मैन मेड है। 99% जो जंगलों में आग लग रही है वो मैन मेड आग लग रही है। अब वो खैर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो जंगलों में आग लगती है। एंड इन जस्ट वन लाइन आई विल से दैट एवरीथिंग इज एक्चुअली इंटर रिलेटेड। महेश जी पानी की बात भी कर रहे थे, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट की। तो भाई जब आपके जंगलों में आग, तो जब जंगल में आग लगेगी उसका खाली एक कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, इट विल हैव मेनी मेनी कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये अब 50,000 हेक्टेयर में आग लग चुकी है। तो ये अपने आप में, एज आई सेड, इज अ मैसिव नंबर। बट टू कम बैक टू द सक्सेस स्टोरी ऑफ शीतला खेत, of Sitla Khet success story, how the local communities there, particularly women, and at this point of time, जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं ये इस बात पे जोर डालना चाहता हूँ कि माउंटेन कम्युनिटीज में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रिया और जितने भी आप लोग, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं इस समय, मैं खाली इस बात पे जोर डालना चाहता हूं कि जो भी यहाँ पर पॉलिसीज बनती हैं सरकार के माध्यम से, उसमें विमेन पार्टिसिपेशन
जो है उसको हम लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो पूरा जो पहाड़ है, एक तरीके से पहाड़ जो है वो महिलाओं के कंधों के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये इस जो जो जेंडर की हम बात करते हैं, जेंडर का रोल, ऑफ कोर्स जेंडर का रोल वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट सभी जगह होता है, बट पर्टिकुलरली इन द माउंटेन कम्युनिटीज जो जेंडर रोल है वो अर्बन एरियाज की तुलना में शायद कहीं ज्यादा हो जाता है। मैं उस पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। ऑल आई सिंपली सेज की जो महिलाओं का जो योगदान है, particularly in the hill areas of Uttarakhand, and this is a very very well known, it's a very very well documented fact, and इसका बहुत ज़्यादा recognition भी है जो है हमारी कम्युनिटी में और हमारी सोसाइटी में इस बात को लेकर के कि जो महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है। तो बट इफ आई हैड टू अगेन समराइज दैट पॉइंट, आई विल सिंपली से दैट वी नीड मोर वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। तो मैं शीतला खेत का एग्जांपल दे रहा था, देन आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल कम बैक टू श्रेया। So how the communities are working together in this Sitla Khed region, and how they are working together to prevent forest fires. In fact, last year government, इसी साल हमारी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने एक शीतला खेत मॉडल को भी रिकॉग्नाइज किया है of community participation. There are other such models, but as I had said earlier, that all these community based models, they need scaling up. Currently they tend to be very very localized. Till the time we don't scale up these models in one way or the other, they will remain confined to their more of their local regions. Priya ji, aap kuch kehna chahengi before we look at what Shreya is saying? No sir, nothing at all. हाँ, तो श्रेया का लिखा है कि भाई उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस है। आई वाज वंडरिंग वेदर दीस टूरिस्ट और रेगुलर ट्रैवलर्स ब्लॉगर्स have anything to do with the awareness about these climatic issues. श्रेया अब क्या बोलना, वो ब्लॉगर आ रहा है, ब्लॉगर का तो जो एक्चुअली इंटरेस्ट है वो तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आ रहा है, ब्लॉगर जो आ रहा है ना, तो इसलिए जो वो इसलिए उनका कोई इतना ज्यादा वो क्लाइमेट की तरफ कोई सेंसिटिविटी फ्रैंकली मैंने तो नहीं देखी है। और जो टूरिस्ट की बात कर रहे हो अब आप, वो फिर आपने जो है एक बड़ी दुखती रग को छेड़ दिया है। देखिए टूरिस्ट, अब वो शायद हमारा टॉपिक नहीं है भाई अब, लेकिन वेस्ट जनरेशन हैज बिकम अ ह्यूमंगस इशू इन द हिल रीजन्स। तो अब ये वेस्ट का जो पूरा मैटर है भाई, मिलियंस एंड करोड़ ऑफ टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स आर कमिंग। अब वो टूरिस्ट तो आ रहा है बट वो अपना वेस्ट छोड़ के जा रहा है। So also, through your program, one appeal that I would like to make, to the 80 or 90 people, who are listening to this program, if one actionable item that, you can do to do is, you will also be wondering, यार हम 1 घंटे से सुन रहे हैं, 2 घंटे से सुन रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो छोटा सा काम आप ये भी कर सकते हैं कि भाई जब आप भी कभी, आप या हम भी कहीं जाएं, क्योंकि हम बार बार टूरिस्ट को कहते हैं, लेकिन हम भी तो लोकल लोग भी तो गंदा करते हैं। तो ये जो लिटरिंग है हमारी कंट्री में वेस्ट की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू है। एंड पर्टिकुलरली फॉर अ फ्रेजाइल स्टेट, फॉर एक जो रिवर्स, हमारी स्टेट में रिवर्स बहुत हैं, वो कचरा सारा का सारा नदियों में चला जाता है, वो ओशन में जाता है। तो मैं एक अपील जो आपके इस प्रोग्राम के थ्रू प्रिया जी करना चाहता हूं, मैं ये जो लिटरिंग और वेस्ट मैनेजमेंट की जो अपनी चिंता है, मैं उसको जाहिर करना चाहता हूं। और मैं एज सिटीजन्स और कम्युनिटीज आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आपको भी कहीं अगर कोई लगता है कि कहीं कोई गंदगी कर रहा है, तो चाहे वेदर इट इज थ्रू सोशल मीडिया और इन एनी अदर वे, अवंतिका कैन आल्सो डू दिस। अवंतिका कैन मेक अ 1 year प्लान एंड से कि यार हम 1 साल तक हम एक चलाएंगे, मतलब सी अवंतिका आल्सो, भाई यू आर आल्सो स्टूडेंट्स, आपके भी तो एक लिमिटेड बैंडविड्थ है। यू आल्सो कांट कीप ऑन, भाई यू डोंट हैव 50,000 people, you don't have unlimited budgets. So in your own way, my submission to Priya, to you and to your students will be that, along with the support of NIDM, that if you could just sort of pinpoint 1 or 2 things, and maybe not today but some other day, along with Mahesh ji and me and your other speakers, we can come on a smaller Zoom, and then we can identify, as I said, 1 or 2 things, 1 or 2 areas where we can try and work together for some period of time, so we don't make it one off. अब ये क्या है, तो हमने एक बारी Zoom कर लिया, हमारी बात हो गई और बात हुई और बात खत्म हो गई। तो that is where I will leave it at that. But as I said, शीतला खेत का मॉडल है, फिर एक सच्चिदानंद भारती हैं हमारी स्टेट में, वो किस तरीके के साथ में वाटर बॉडीज को बना रहे हैं, कुछ अलग अलग लोग कुछ इको टूरिज्म के मॉडल्स को डेवलप कर रहे हैं। सो देयर आर सेवरल सच एग्जांपल्स। लोग महेश जी ने भी खेती को लेकर के बात करी थी, पीपल आर अडेप्टिंग एंड डूइंग ऑल्टरनेट काइंड ऑफ फार्मिंग, अपनी फार्मिंग टेक्निक्स को चेंज कर रहे हैं। तो देयर आर सेवरल सच एग्जांपल्स
But when I look at the big picture, when I look at the macro picture, at least from my point of view, much more needs to be done, much more needs to happen. These are more, I call them, as I said, मैंने earlier भी कहा था, these are more islands of excellence. तो हमको इनको scale up करना है, and frankly, it can't be business as usual. हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाना पड़ेगा. तो प्रिया जी, आपने मुझे आज invite किया. There is so much to talk, but yeah, what to say, and I wish I could have prepared better for today's session. Actually, I was traveling, for last 2 days, so I could not do. I know I have not done adequate justice, to this invitation that you had extended to me. But nonetheless, I just hope that I managed to, or Mahesh ji and I managed to kindle some interest in some young brains somewhere. And we are always available. I will also leave my email ID here in the chat box. If anybody has any question or any suggestion, they are always welcome to write to me. Thank you so much, Anup sir. And if you could throw some light on the Uttarakhand disasters and accident synopsis. Okay, so very briefly, Priya ji, I can share with all your. Are any people from NIDM also listening to us right now? Yes, we do have people from NIDM as well. तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, उत्तराखंड में इतनी आपदाएं होती हैं, तो अब तो हमने एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, that we are now documenting all the major disasters and accidents of Uttarakhand. And हमने इसका एक नाम दिया है, हमने इसका नाम दिया है उदास, UDAS. So it's more by accident कि उसका जो नाम है वो उदास पड़ गया, उत्तराखंड उदास. उदास का अर्थ है UDA. So U is Uttarakhand, D is disaster, A is accident, and S is synopsis. So Uttarakhand disaster and accident synopsis. तो हम लोगों ने इसको अक्टूबर 2022 से बनाना शुरू किया है. और आपको मैं उसका भी कारण बताता हूं कि हमने अक्टूबर 2022 से क्यों स्टार्ट किया. क्योंकि अक्टूबर 2022 वाज अ वेरी वेरी क्रूअल मंथ फॉर उत्तराखंड. सो इट्स अ 4-पेज डॉक्यूमेंट. तो मैं जब अपनी बात खत्म कर दूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिया जी उसको दिखा भी देंगी. अक्टूबर 2022 वाज अ वेरी क्रूअल मंथ फॉर उत्तराखंड. एंड ऑन द 4th of October, सो इन द मॉर्निंग, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को याद होगा, उत्तरकाशी में एक एवलांच आया था. आप में से क्या किसी ने, आपको ध्यान आ रहा है उस एवलांच के बारे में? आपने किसी ने पढ़ा था? अगर आप किसी को यस कर देंगे, उत्तरकाशी यस कर देंगे, तो मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप हमको सुन रहे हैं या आपको मालूम है. नहीं, प्रिया जी को तो चलो सारी चीजें पता हैं, तो ठीक है. कुछ और अगर तो अच्छा, तृप्ति ने कहा नहीं. तो एक्चुअली क्या हुआ था तृप्ति, और जिनमें से आप लोगों को नहीं पता है, यहाँ पर एक देयर इज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. तो वो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जो माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देता है. तो वो लोग अपने 29 लोगों के एक ग्रुप को लेकर के यहाँ पे एक पीक है, उस पीक पे गए थे. उस पीक का नाम द्रौपदी का डांडा 2 उस पीक का नाम है. और 4 अक्टूबर की सुबह एक बहुत बड़ा एक एवलांच आया. और ये भी एक क्लाइमेट चेंज ही कहेंगे उसको, और क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो अभी नेचुरली अनप्रेडिक्टेबल है. खैर, पहाड़ों में कभी भी, ये तो मतलब एक्सट्रीम इवेंट है ये वाला. और उस एवलांच में 29 लोगों की सवेरे मृत्यु हो गई थी. मतलब उस 29 में से एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट तो कहती है 27 लोगों की मृत्यु हुई है. तो 29 इसलिए नहीं कहती क्योंकि अभी तक 2 लोगों की बॉडी नहीं मिली है वहां पे. अब लेकिन ये तो अक्टूबर 4 की बात है, तो दिसंबर आ गया, तो अब वो नेचुरली वो खैर वो कहाँ बचे होंगे. तो वो 29 ये सवेरे की बात है, 4 अक्टूबर को. उसी दिन शाम को 4 अक्टूबर को एक और पौड़ी हमारा हिल डिस्ट्रिक्ट है, उस दिन रात में एक बस एक्सीडेंट हुआ और वहां पर 34 लोगों की मृत्यु हो गई थी 4 अक्टूबर को ही. उसके बाद 18 अक्टूबर को केदारनाथ एरिया में एक हेली क्रैश में 6 या 7 लोगों की मृत्यु हुई थी. और उसके बाद में 22 अक्टूबर को ये हमारा जो चमोली डिस्ट्रिक्ट ही है, वहां पर एक महेश जी ने भी एक जिक्र किया था, जब बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है तो एक अब उसको क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड अब आप बोल लीजिए. तो एक गांव है, उस गांव में इनफैक्ट वो गांव भी वो क्लाइमेट के कारण अफेक्टेड गांव है.
तो वहां पर खूब सारे बोल्डर गिरे और एक जो परिवार वहां पर दिवाली मनाने आया था, उन 4-5 लोगों की वहां मृत्यु हुई थी। तो ऐसे करके 74 लोगों की मृत्यु अक्टूबर 2022 के महीने में इन 4 अलग अलग इंसिडेंट्स में हुई थी। एक एवलांच में, एक रोड एक्सीडेंट में, एक हेली क्रैश में, और एक जो मैंने बताया ये गांव में जो इसके कारण जो अतिवृष्टि हुई और जो सारे बोल्डर वगैरह गिरे थे। तो हमने ये एक डॉक्यूमेंट बनाया है। इस डॉक्यूमेंट को मैंने प्रिया जी के साथ शेयर किया है। प्रिया जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने जो भी आपके इंटरेस्टेड होंगे आप उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अब हम इसको हर मंथ करेंगे। तो जो अगर NIDM के भी लोग अगर मुझे सुन रहे हैं इस समय, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम लोग उत्तराखंड में इसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। आप लोग अगर मेरे को प्लीज अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा इस डॉक्यूमेंट में, आप मेरे को प्लीज ईमेल भेज दीजिएगा, मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा। और ये हमने नवंबर में भी बनाया है। अब नवंबर के महीने में 6 नवंबर, 9 नवंबर और 12 नवंबर को अर्थक्वेक के ट्रेमर्स आए थे। तो अर्थक्वेक के बहुत ज्यादा ट्रेमर्स आते हैं, तो ऐसे करके तमाम चीजें होती हैं। तो हम इसका, ये भी प्रिया जी हमारी तरफ से एक एफर्ट है जहां पर हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो अगेन बीइंग अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑल दैट वी कैन डू, सो पीपल लाइक अस, because we are not in the government, the 80-90 people here, we are ordinary citizens. So I think we all need to be a little bit more, and I'm saying this with humility, but if we can all be more sensitive, we can be more aware towards these issues and do our tiny parts, do our tiny bits, towards these issues. So when many of us, and many more of us will start talking about these issues, will become more sensitive towards these issues, that is how change will come. And that is why I very much appreciate this initiative of Avantika University and NIDM, to discuss at least the issue of climate change. I know that practically it is not possible for us, over a Zoom to come up with some, hardcore solution and say 1 2 3 ये 3 काम हम कर लेते हैं तो हमारा climate change solve हो जाएगा। वो तो practically हम सबको पता है possible नहीं है, but at least हम इन मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अवंतिका यूनिवर्सिटी तो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकती थी। बट मुझे इस बात की बड़ी खुशी है प्रिया कि आपने जो है एक एनवायरनमेंट का इश्यू आपने जो है इस जूम कॉल के लिए या इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपने NIDM के साथ में लिया है। तो उसके लिए मैं आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट यू एंड आई होप दैट व्हाट महेश जी एंड आई हैव शेयर्ड टुडे, एंड उसको फायदा हुआ है उसका थोड़ा बहुत, प्रिया, या नहीं हुआ कुछ? yes tremendous, no tremendous sir. And आपने जैसे rightly कहा सर, climate change is a very matter of very grave concern, क्योंकि जो दूसरे गांव तक पहुंचा है कभी ना कभी हमारे घर तक तो पहुंचेगा ही। नहीं, वो बहुत बढ़िया है। हमको यही लगता है ना, हमने अच्छी बात बोली भाई, हमें लगता है यार वो तो कहीं और हो रहा है, ये तो कहाँ मेरे दूर का है, बट वो धीरे धीरे करके सब हम सब तक आएगा। या इफ यू डोंट माइंड, आप वो उदास का एक बारी शीट खोल सकते हो, वेरी नॉट रीड इट बट जस्ट फॉर एवरीवन टू गेट अ फ्लेयर एंड अ फील ऑफ हाउ इट लुक्स लाइक, दैट विजिबल सर। नहीं, वो खुल नहीं रहा। हाँ, अब ये खुल गया है। नीचे आप आ जाइए, तो ऐसे करके आप आ जाइए, नीचे आते रहिए। एक सेकंड थोड़ा धीरे करेंगे, ऊपर जाना, जरा ऊपर आ जाओ, ऊपर आना। तो जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, समरी ऑफ की उत्तराखंड कैजुअलिटीज इन अक्टूबर 74 डेथ्स। तो हमने 1 2 3 4 करके चारों की चारों हमने कैजुअलिटीज लिख दी हैं। नीचे आ जाइए। तो अब ये पहली कैजुअलिटी है, नंबर 1। ये नंबर 2, अब नीचे आ जाइए। ये दूसरी कैजुअलिटी है, इसकी डिटेल्स हैं। फिर नंबर 3, ये तीसरी कैजुअलिटी है, जो मैं कहा था 7 डेथ्स हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। नीचे आ जाइए। ये चौथी कैजुअलिटी है, अक्टूबर 22, 4 डेथ्स इन अ हाउस कोलैप्स ड्यू टू लैंडस्लाइड। तो ये करके, एंड वी आर ऑल्सो डॉक्यूमेंटिंग द नॉन कैजुअलिटी डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स इन अक्टूबर, सो नॉट द मेजर वंस। In fact, there was an avalanche also in the Kedarnath region on 1st October. तो ये करके एक डॉक्यूमेंट, ये अक्टूबर का है, ये बंद कर दीजिए प्रिया। ऐसे करके ये नवंबर का है। तो नवंबर में तो ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई, एक बड़ी कैजुअलिटी हुई थी, एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। नीचे आ जाइए और नीचे आ जाइए। ये नॉन कैजुअलिटी थोड़ा ऊपर करेंगे, ऊपर। तो ये अर्थक्वेक आया था मैग्नीट्यूड 4.5 का। तो ये 6 नवंबर का डॉक्यूमेंटेशन है। नीचे आना, 9 नवंबर का डॉक्यूमेंटेशन है, और ये 12 नवंबर का डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये ऐसे करके डॉक्यूमेंट। तो कैसा लगा आप लोगों को? प्रिया जी बंद कर दीजिए इसको, थैंक यू। तो आई नो आपको कुछ एटलीस्ट कुछ आइडिया लगा होगा। अगर किसी का कोई व्यू है इस उदास डॉक्यूमेंट को लेके, तो आप मेरे साथ या अभी चैट में आप शेयर कर सकते हैं। तो प्रिया जी, आई थिंक मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
है ना, और आई मोस्टली क्या स्टूडेंट्स हैं इस 89 में से? वी हैव फैकल्टी आल्सो सर, अच्छा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टीज भी हैं। अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत क्रूशल एस्पेक्ट के ऊपर जोर दिया। एंड सभी मेरे फ्रेंड्स को एक रिक्वेस्ट है कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ अस आर फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे सर ने बोला कि इफ वी कैन हेल्प द कम्युनिटी विच इज नियर टू अस, सो इफ वी कैन गो टू मे बी 5 villages, close to the place where we are, and adopt those villages for capacity building, for awareness sessions. I think if we can reach out to our immediate neighbors and everyone reaches out to their neighbors, then India would be a great place to live in, even in times of disaster. And we feel that NIDM is doing a wonderful job, and we should join hands with them and the government in this manner so that we can help the nation together. Thank you so much, sir. Dear friends, the session is open for question and answers. In case you have any questions, please go ahead and ask the questions. Anyone, any questions, please? Good afternoon, Anup sir. I have a question. हाँ जी सर, जैसे बताया गया है कि वाटरफॉल्स जो है या झरने हैं, उनका अपना महत्व होता है वनस्पति प्रिजर्व करने में या इकोनॉमी के लिए भी। तो आपको क्या लगता है सर कि जैसे वाटरफॉल्स जो है ये नेचुरल ही होते हैं या मैन मेड भी होते हैं, तो इसके प्रिजर्वेंस के ऊपर भी क्या काम किया जा सकता है? देखिए, मैं अब सॉरी, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते तो। सर, मैं डॉक्टर मीनल शर्मा हूँ, आई एम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट इन अवंतिका यूनिवर्सिटी। सॉरी, डॉक्टर मीनल शर्मा। मीनल, अच्छा, डॉक्टर मीनल शर्मा है जी जी। तो मीनल जी, ये जो महेश जी ने भी उसका जिक्र किया था, मैं आपने जो वाटरफॉल्स की बात जो करी है, एक्चुअली क्या है, देखिए, ये जो हमारे जो वाटर का सोर्स है ना, बेसिकली वो स्प्रिंग है। तो और ये तो नेचुरली है। अब ये जो आपने जैसे आपने तो खैर वाटरफॉल और झरने का कह दिया, लेकिन जो बेसिकली जो लोगों की पानी की जरूरत है वो हमारी स्थानीय भाषा में यहाँ पर उनको जैसे नौला कहा जाता है, इस तरीके के उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो वो बेसिकली एक्विफर से नीचे से पानी आ रहा है। अब ये एक एक्चुअली बहुत बड़ा पानी का संकट, भाई देखिए, हम किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये पानी का, मैंने कचरे की बात करी, अब आपने जो है एक और दुखती रख छेड़ दी। पानी का जो संकट है हिमालयन क्षेत्र में, वो अपने आप में एक बड़ा ग्रेव संकट है। पानी का संकट तो वैसे भाई दुनिया ही कहती है कि जो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी को लेकर के होगा, लेकिन हम तो अपने पहाड़ के संदर्भ में बात करेंगे। तो जो स्प्रिंग है वो बेसिकली प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है मिलियंस ऑफ रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के लिए। अब यहाँ पर जो है कि अब मैं अगर आपको पूरे देश की बात भी करूं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक वर्कशॉप करी थी स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट के ऊपर, तो पूरे देश में ये कहा जाता है एक अनुमान, क्योंकि देखिए उसकी एग्जैक्ट गिनती नहीं गिन सकते, अनुमानित यह है कि हमारे पूरे देश में 50 लाख जो है स्प्रिंग्स हैं, जिनमें से इंडियन हिमालयन रीजन खाली उत्तराखंड नहीं है, जितना पूरा इंडियन हिमालयन रीजन है उसमें लगभग 30 लाख है। तो उस 50 लाख में से 30 लाख या 3 मिलियन जो है हमारे इंडियन हिमालयन रीजन में है। तो अब ये पूरी पानी की उपलब्धता देखिए, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी भी तो है। तो पहले तो वो अवेलेबल हो, फिर उसकी क्वालिटी हो, और उससे जुड़े हुए जितने तमाम पहलू हैं, ये भी अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा एक्चुअली इश्यू है। तो अब ये स्प्रिंग शेड का उसका रिजुविनेशन कैसे हो, ये इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। भाई हमने माइग्रेशन को लेकर बात करी, अब जब पानी नहीं होगा, जब आपके पीने के लिए पानी नहीं होगा, जब आपकी खेती के लिए पानी नहीं होगा, तो नेचुरली आप वहां कैसे रह सकते हो? भाई आपकी कम्युनिटी वहां रह नहीं सकती, आप लोग रह नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? आप वहां से माइग्रेट कर लेंगे। तो चाहे वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, तो बिकॉज वी ऑफ कोर्स ऑल नो, इवन दो वी डोंट लिव इन द विलेज, बट वी ऑल नो कि भाई सारी चीजें जो हैं एक दूसरे के साथ में वो जुड़ी हुई होती हैं। और नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा इस स्प्रिंग डिस्चार्ज को लेकर के, तो ये जो है भाई इन जो पूरा का पूरा जो लैंड यूज चेंज हो रहा है, इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको लेकर के बहुत सारी खैर बातें हैं। अब इसको भी लेकर के भाई कुछ कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं इस स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट को लेकर, जो जिस झरने को लेकर के जो है आपने अपनी जो चिंता जताई है, और ये पानी को लेकर के। अब क्या हुआ कि भाई सरकार की योजना तो है कि भाई नल तो लगाना है घर में, नल तो लग गया, लेकिन नल में पानी भी तो आना चाहिए। तो ये जो है अपने आप में एक और बड़ा इश्यू है, और इसको लेके भी भाई जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, इसी पे वो काम करते हैं, बट इस पे भी जैसा मैंने कहा कि भाई जो 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 क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, ड्राउट मॉनिटरिंग है,
river region. So there are many elements to this. I will simply in one sentence say that ये जो पानी का जो इश्यू है ये अपने आप में एक बड़ा बहुत बड़ा ग्रेव इश्यू है और इसके लिए भी we need to find nature based solutions. We have to go back to nature based solutions rather than engineering based solutions. So yeah, that is where I will Okay. Thank you. Thank you so much, sir. I'm extremely thankful to the National Institute of Disaster Management for the support provided for the 3-day online training program on community-based climate change adaptation. We're also thankful to Mahesh Kamble sir from Tata Institute of Social Sciences, who was our first speaker for today, and Anup Notial sir from Dehradun for joining us today and sharing his views and enlightening all of us. Thank you so much, sir. It was a pleasure to listen to you. And we hope that we can join hands with you in the near future and work towards the betterment of our nation. जी मैं कभी उज्जैन नहीं आया अब आप एक मेरे को जी आइएगा सर जरूर आपको वेलकम है मोस्ट वेलकम हमारे पास क्या कहते हैं आपने टिकट भेजना है तभी आप आएंगे हम वहाँ पे श्योरली सो थैंक यू सो मच सर तो देवाशीष जी का एक क्वेश्चन है जी is there any method to assess hazard susceptibility developed by Indian government? I think ये NIDM वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे देवाशीष जी but there is a lot of information आप इसको देखिएगा NIDM वगैरह की साइट पे भी so thank you so much and good luck and happy new year to thank you happy new year to everyone thank you everyone kindly join us tomorrow at 11 a.m. for the third and final day of the 3-day online training program. Thank you.